क्या चाहिए? क्वेश्चन आंसर लिखे ध्यान कर लिए मैंने। कंप्लीट हो गया ना? हाँ। ठीक, मैं रोटी बना के अभी आ रही हूँ तो टेस्ट लेते हैं। सुन लेना। हाँ सुन लूंगी, पहले काम तो कर लेने दो। पापा का फोन आ रहा है क्या? किसका? क्या है बेटा? लर्न हो गया, रोटी बना रही हूँ ना, अभी खाली तो नहीं हूँ ना, तब तक अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर आके मैं टेस्ट ले लेती हूँ। इसमें क्या है? सब्जी। कौन सी है? अरे कोई सी है, सब्जी है। बनाई है? अरे फिर क्या खरीद के लेके आई है? मेरे को दे देना। हाँ तो अभी तो बना रही हूँ ना, अभी दे रही हूँ। चलो अब तक अपना काम करो। भूख लग रही है। पहले काम कर लो।
का मैसेज है। पानी की बोतल दे दो पापा को। क्या चीज? पानी का बोतल दे पानी दो। बोतल ले जाओ, नीचे तो भरा है सारा। पापा को चाहिए। पापा उठ गया? हाँ। ड्यूटी तो नहीं जानी है ना, पूछ लेना है। नहीं, ड्यूटी नहीं करना। जय भीम, नमः बुद्धाय। सोनू भैया जय भीम, कैसे हो आप? कैसे हो? मस्त हैं, आप कैसे हैं? हम भी तो अपने काम में व्यस्त हैं। मस्त तो नहीं है, व्यस्त हैं। कलावती, कलावती दीदी थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका लाइव में। कैसी हैं आप? खाना पीना कुछ हुआ? सपोर्ट करिए। ओके दीदी। नहीं, अच्छा। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हैं?
अब कल खाना होगा। अच्छा, कल खाना होगा, आज नहीं होगा। कुछ खाने के लिए लेके चलना चाहिए था ना आपको। नहीं। अच्छा, खाना भेजो। कलावती दीदी चली गई क्या आप? खाना पीना हुआ आपका दीदी? डर से कुछ नहीं खा रहे। बाथरूम में पब्लिक भरे पड़े हैं। अच्छा, तो क्या करने के लिए चालू में चढ़ गए? किसने कहा चालू डब्बे में आने के लिए आपको? बस से आ जाते। शायद बस नहीं आती है ना वहां से डायरेक्ट यहाँ की। सफर लंबा है ना। कहीं टीटी पकड़ेगा ना तो हंसी निकाल देगा आपकी, जो बिना टिकट के आ रहे हो। कम हंसो। मैं तो सीट कवर करके रखा हूँ। बहुत चालाक हो। सीट मिल गई है। कब्जा? अच्छा, कब्जा करके रखे हो। थैंक यू। बैठ के आना आराम से। अब फोन का और बाकी सामान का ज्यादातर ध्यान देना। ऐसे भीड़ भाड़ में लोग फोन उन चोरी कर लेते हैं, सामान चोरी कर लेते हैं। सच्ची भाई, झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज अभी मेरे घर में आज अभी चोरी हुआ है फोन। लोग मार्केट गए थे, फोन ही चोरी कर लिया किसी ने, पीछे से जेब में से निकाल लिया। 55,000 का फोन ली थी उन्होंने। रोती हुई घर आई हैं।
सच्ची ऐसे लोग हो रहे हैं। बहुत भीड़ है। भीड़ तो हो ही रही है भाई, गांव से भी बहुत लोग गए, टिकट नहीं मिल रहा है आने के लिए। इस टाइम भीड़ चल रही है बहुत। मैं तो आराम से बैठा हूँ। ओके भैया, थैंक यू। आराम से बैठो, आराम से ही आओ। थोड़ा बहुत कुछ खा लेना जरूर। इतनी हंसी कहाँ आ रही है? मेरा नेटवर्क इशू है। अच्छा, इसलिए हंसी आ रही है।
फोन एक बार ऑफ करके ऑन करो, आ जाएगा नेटवर्क। ठंड चालू हो गया। बम्बई नहीं है, ये दिल्ली है। यहाँ तो ठंड लगेगी ही। वहां तो पंखा चल रहा था ना। यहाँ पे एसी चल रही है, एसी। कूल कूल वाली। बम्बई में आपको गर्मी ज्यादा लग रही थी ना। मैं तो टी शर्ट खाली पहना हूँ। अच्छा, क्यों? वो भी नहीं पहनना चाहिए था? आपको पता है ना यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, टी शर्ट क्यों पहन ली है? कल आएंगे कि नहीं स्टेशन? हम सबसे पहले पहुंचेंगे। आप हमको ढूंढना, हम आपको, घर वाले हम दोनों को।
आप तो ढूंढने पे मिल भी जाओगे, हमसे कोई पता पूछेगा ना कहाँ हो, हम तो बता ही नहीं पाएंगे, फिर वहीं एक कोने बैठ के रोएंगे।
थैंक यू भैया। फूल कुमारी सिस्टर जी कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं बताइए। सब्जी खा लिया? ऊपर मिलकर खाना है। सब आलू मेरे
जय भीम, नमो बुद्धाय। मनोज भैया स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हो आप? कैसे हैं आप?
मम्मी मम्मी
जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई कैसे हो आप? पूजा दीदी जय भीम, स्वागत आप सभी का। सोनू भैया बहुत हंस रहे हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। सेम टू यू भैया। आपका खाना पीना हो गया है दीदी? हाँ भैया, खाना पीना हो गया। बच्चे हैं छोटे छोटे, घर में दौड़ रहे हैं। हमारी ननद के 2 लड़के हैं, वही परेशान कर रखे हैं। और आप दवा खा लिया है? अभी नहीं भाई, अभी नहीं। मस्त हैं। आप कैसी हैं? सबको पता है आप मस्त हो, इतना हमको भी पता है। बिना टिकट के आए हो ना, कहीं टीटी पकड़ लिया आपको ना, मस्ती निकल जाएगी फिर। दवा टाइम पर क्यों नहीं खाती हो दीदी? नहीं भैया, खाऊंगी अभी। आज ना थोड़ा काम ज्यादा था, अभी तो मैं किचन में ही थी। कभी कभी काम ज्यादा हो जाता है, क्या करे, काम में ही बिजी हो जाते हैं। ठंडी लग रहा है? अच्छा, जा। पंखा नहीं चल रहा है क्या भाई? ऐसा क्यों करती हो दीदी? क्या करे भाई, कभी कभी काम ना ज्यादा हो जाता है भैया। तो टंकी का पानी से नहा लीजिए सोनू भैया। अरे नहीं भैया, दिल्ली में टंकी के पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सप्लाई के पानी से ही सोनू भैया नहा लें, जो आता है। टंकी के बाद में नहाएंगे, ठंड लगना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। बम्बई में पंखा चलाते थे ना, वहां से उसी हिसाब से अपना टी शर्ट पे चले हैं। अब यहाँ आ रहे हैं, कह रहे ठंडी लग रही है। सुपर भाई। पूजा दीदी थैंक यू। कहाँ चली गई पूजा? पूजा दीदी तो यही है भैया, अभी गई नहीं है। कमेंट तो आ रहा पूजा दीदी का। सोनू भैया कुछ खाए पिए कि नहीं अभी? मैं आज भाभी को एक अनजान आदमी के साथ में देखा था। कौन से भाभी को भैया? सोनू भैया की वाइफ को? भारती भाई आप समझा दीजिए दीदी को, आपको मजाक लग रहा है। सोनू भैया मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। तो मैं उनसे छोटी हूँ। नहीं, क्या भाई झगड़ा लगा रहे हो आप? मैं भाई के नाते आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है भैया, जो खाली बोतलें इकट्ठी करो भर लो। मैं दीदी से बड़ा हूँ। हाँ, मेरे से बड़े हो भैया आप, अभी सही बोले हो। बोतलें खाली भर लो।
भाई हमेशा बहनों से बड़ा होता है, छोटा रहता है तो भी, बड़ा होता है तो भी। थैंक यू सो मच दीदी, पूजा दीदी थैंक यू, भारती भैया थैंक यू, सभी लोग। अब बाजा कौन बजा रहा है? बोतल ढालने के सारा बोतल पानी भरो बाल्टी में, किचन वाली। चल सारी बोतल भरी हो। भाई साहब थोड़ा सा हेल्प करवा दो श्रेया। सारी बोतल, एक भी बोतल छूटनी चाहिए। मुझे ये लगा कि हम लोग भी कहीं चल गए थे कि भाभी दूसरे के साथ में घूम रही थी। नहीं भैया, भारती भाई कहाँ है हमारे सोनू भैया, कैसे बोल रहे हो? हमारी भाभी बहुत अच्छी है। आप भाइयों से ज्यादा अच्छी तो भाभी हैं। भाई आप तो सच में झगड़ा लगा रहे हो। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है भाई आप मजाक कर रहे हैं। चलो तो हम की पूजा थी, यहाँ पूजा थी, यहाँ माता की लड़की देखते एक जो रखा पड़ा है। सोनू भैया इतना गुस्से में काहे देख रहे हो? जनता ना तू बहुत सिर चढ़ा लगा। अरे वो छोटकी मामी के तोरे हाँ मरबो करी है। हाँ छोटकी मामी कहाँ आई? कहाँ आई? कहाँ? नीचे ऊपर गई नहीं? ऊपर देवा था।
देके आ जा। कहाँ जा तो मिले? अच्छा जा मिला। एक भाभी मेरे पास की है दीदी। अच्छा भैया भारती भाई, आपका भी खाना पीना हुआ कि नहीं अभी? हाँ। हाँ। सुबह खाते बच्चों बीमार होकर हाथ में ले लो। नेटवर्क चला जाता है। अच्छा भैया, वो तो कुछ नहीं बोल रही थी और चुपचाप हो गई और उसको लगा कि मुझे कैसे देख लें। अच्छा, कहीं सोनू भैया की पहले वाली वाइफ तो नहीं थी? आप कैसे जानते हो भारती भाई उनको? एक मिनट भैया, आ रही हूँ। भाई आप अंधेरे में तीर मार रहे थे, उनको सच में लग गया। पूजा दीदी। तो बोल रही थी कि मेरा भाई था और मैं बोला कि मैं आपके सभी भाई को जानता हूँ, यहाँ तक कि मामा का लड़का से लेकर फूफा के लड़का तक सबको जानता हूँ। हाँ पूजा सही बोल रही हो। बोतल भर ली खाली सारी? मैं नहीं भरी है। बाल्टी भर रहे हैं। बाल्टी
मैं कितने भाभी और भाई के बीच झगड़ा लगा दिया हूँ। नहीं भारती भाई, ऐसा मत करो। बात करने का तरीका भाई कोई आपसे सीखे। मैं बहुत खलनायक लड़का हूँ दीदी। खलनायक ना बनो भाई। उसे बैठा दो बाबू, बैठ के खेलो। ये जब ये लेटा है ना तो रोता है। ये रोता है। बैठा दो उसे, बैठा दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले खलनायक बनो, उसके बाद नायक बनो। अच्छा भैया। पीयूष, पीयूष, वो देख रहा है। इतना क्यों हंस रही हो पगले? पूजा दीदी क्यों हंस रही हो? भारती भाई पूछ रहे हैं। और आज भाभी को मार्केट लेकर गया था दीदी, और मैं कंफ्यूजन हो गया भाभी के ही पहचानने में। अच्छा भैया। किचन की बाल्टी भर गई? भर गई? आपकी बातों से भाई मुझे हंसी आ रही है। फोन देना, इधर लेना। कभी तो ऐसा इसलिए हुआ कि पहले मैं उनसे बहुत शर्माते थे। अच्छा, भाभी से? भाभी को देखे हो क्या? मैं उनको अच्छे तरीके से देखा भी नहीं था दीदी। अच्छा, अच्छी तरीके से देखे नहीं थे तो पहचाने कैसे? देखे भी नहीं और इतनी बड़ी बातें बोल दिए भाई। किसका फीवर चेक हो रहा है?
अब मेरा भाषण समाप्त हुआ। अच्छा भैया। सोनू भैया से मांगो, उनकी सच्चाई उनके बताए हो, राशन हम लोग दें? बताओ। उसमें बेईमानी मत करना दीदी। बिल्कुल करेंगे भाई। भाषण तो आप सोनू भैया के बारे में उनको बताए हो, राशन हम लोग दें? ठीक है। और क्या बताऊं? टंकी भर गई क्या? लपेट के तार उस पे रख दो। पहले मेरा राशन भेज दो, फिर मैं सुनाऊंगा। राशन क्या भेजूं भाई? बताओ बताओ भारती भाई। राशन चाहिए भाई, अंजू दीदी बोल रही हैं। पूजा बहन, मैं आपके कुछ पूछूं? कौन रो रहा है? बोलो। पूजा बहन, मैं आपके कुछ पूछूं? मेरे पास राशन नहीं है भाई। हाँ भाई पूछिए, तो फिर मुझे भाषण सुनाओ बदले में। बाकी मैं आपको राशन नहीं दूंगी भाई। मेरा डीपी कैसा लग रहा है दिखने में? पूजा दीदी बोल रही है पागल भाई। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। दीदी, आप पूजा को दीदी क्यों बोलती हो? क्या बोले बताओ भाई। क्या? क्या बोले बताओ। फिर चलो करो अपना अपना भाषण। छोटी बहन बोलो। सवारी करेंगे क्या भाई?
किस चीज की पूजा दीदी? बकरी की? सोनू भैया का तो नेटवर्क चला जा रहा है। या फिर पगली बोलो, पूजा को लेखी दीदी मत बोलो। नहीं भैया, बहन है हमारी, हम पगली कैसे बोल सकते हैं? सोनू भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं? सोनू भैया बोल रहे हैं नहीं। हाँ, गधा का द्वारा जाऊंगा। अच्छा, कहाँ जाओगे? उसकी सवारी तो इतनी जल्दी नहीं मिलती भैया। क्यों नहीं और क्या नहीं बोलूं भैया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बकरी को कहाँ लेके जा रहे हो? चराने वराने क्या भारती भाई? यहाँ कहाँ? मर जा। आप सत्य सत्य बताना। मैं बचपन में बहुत बकरी का सवारी करता था। बोका क्या लिखे हो भैया? ओके भाई, नहीं बताऊंगा मैं। उसको पकड़ पकड़ कर उस पर बैठता था। बचपना कुछ सबसे अलग हटके होता ही है भाई। और घर आने पर सब बहुत पिटाई होता था। मेरे से गुस्सा हो गए हैं सोनू भैया दीदी। नहीं भैया, सोनू भैया किसी से गुस्सा नहीं होते हैं। मुझे पता है सोनू भैया गुस्सा नहीं होते किसी से। वो भी खास कर अपने भाइयों से कभी नहीं होते हैं। आपका कमेंट देखकर आज तो मुझे हंसी बहुत ज्यादा आ रही है भाई। आपका कमेंट देखकर। अच्छा दीदी, दिन भर में कितने के दाई माई ये करते रहते थे।
अब मैं अपना राज का बात नहीं बताऊंगा, नहीं तो मुझे पूरा जिंदगी पछतावा के छिड़कर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई, मेरे घर पर बकरी है भाई सवारी करने के लिए। पूजा दीदी देखो बकरी पाली है अपने घर पे। एक मिनट मेरी अच्छा करना नहीं मेरी है। मम्मी ने मेरी ना जिस दिन पेटीएम था मम्मी ने मेरी ऐसे करके मोड़ के ले गई। मैं बहुत शरीफ इंसान था बचपन में दीदी, मैं ऐसा ही बोल दिया हूँ, इसको आप सही मत नहीं समझना। कोई बात नहीं भैया, बचपना में शरीफ भी होते हैं नहीं भी होते हैं, बचपना एक सबसे अलग होता है। और अपनी फुआ की हाल चाल बताओ। श्रेया कैसी हो? श्रेया लेटी है भैया अभी खाना खा के। सुभाष भैया जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच भैया, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हो आप? क्या हालचाल है बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? आपका खाना पीना हो गया बहन जी? हाँ भैया मेरा खाना हो गया, आप बताइए आपका हुआ? दीदी मेरा फोन 10% चार्ज है। कोई बात नहीं दीदी, आप चार्ज लगा दीजिए फोन को और आप भी खाना पीना खा के सो जाइए। हम बढ़िया हैं, आपके घर परिवार में सब ठीक हैं? सब ठीक है सुभाष भैया, घर परिवार में हमारे सब बढ़िया हैं। आप बताइए आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? दीदी आपका ध्यान किधर है? यही हूँ भैया, बोलो। जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम। हमारा कमेंट ऊपर चला गया। हाँ जी सभी लोग ठीक हैं।
दिखा। कहाँ खो गई हो बहना? खोई नहीं हूँ भैया, यही हूँ। खोऊंगी कहाँ? नहीं, मुझे मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मूवी थोड़ी है भैया। एक कौन है? साधना दीदी। काम करो अपना बेटा, सीधे पैर पर से पहले उठो, पैर दर्द हो रहा है। ये बैग एक साइड करो, अब नहीं पढ़ना है ना, बैग रख दो वहां पे, यहाँ से हटा दो। ये लो। ठीक है, मैं ठीक है, इसको वहां रखो। जान श्रेया कहाँ चली गई हो? श्रेया सो गई है। श्रेया की छोटी सिस्टर जग रही है अभी, शिवांशी। श्रेया सो गई भैया, शिवांशी जग रही है। मामा बुला रहे हैं। कौन सी मामा? आ जाओ, मैं दिखाती हूँ। हाय करो मामा से। बोलो क्या? बोलो मामा, क्या ऐसे हो? भग गए। भाग गई भैया। खाना खा लिया भांजी? बोलो खाना खाई हो? खा लिया। खा लिया, खा लिया। खाना खा लिए भैया। मैं खा लिया हूँ। खा लिया। क्या खाई थी भांजी? क्या खाई? थोड़ा तेज बोलो, ऐसा कोई थोड़ी सुनेगा। ये बहुत कार्टून है, सुन रहे हो क्या क्या बोल रही है? बोल दिया। आज देर तक जाग रही हो आप? मुझको बोल रहे हो भैया? मैं तो रोज ही 12-1 बजे तक जगती हूँ। अब मैं पेड़ दूंगी बेटा तुमको, बदमाशी करोगी तो। पूजा आज बहुत गलत किया है, मैं सुन लिया। मामा सुन लिया। क्या? जो तुम बोली है, क्या खाई हो? बुआ कैसी है आपकी भांजी? कैसी है बुआ बताओ? पीयूष की मम्मी कैसी है? पीयूष की मम्मी बुआ लगेंगी ना तुम्हारी? हाँ, कैसी? चाची थोड़ी ना लगेगी। पागल हो? मैंने कुछ कहा? क्या गलत की हूँ भाई बताइए। सारा जमाने का हूँ पहले, फिर सुनूंगा। मैं सोचा कि भाग गई लाइफ से।
थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लाइव में। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। यदि भाग जाती लाइव से बिना बताए तो आपसे मेरा खानदानी दुश्मनी हो जाता। नहीं भारती भाई, किसी से खानदानी दुश्मनी मत रखो। सुभाष भैया थैंक यू सो मच। जय भीम भैया। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। नीला सलाम फूल कुमारी दीदी। फूल कुमारी दीदी भैया भी खा पी के चले हैं। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। सुभाष भैया आप 2 दिन से हमारे लाइव में नहीं आ रहे थे, कहाँ थे आप? अच्छा, सिर्फ खानदानी रिश्ता रखूंगा दीदी, खानदानी दुश्मनी नहीं। मेरे से कुछ दुश्मनी मत रखना भारती भाई, मेरे से सिर्फ रिश्ता रखना। जय भीम फूल कुमारी सिस्टर, जय भीम। अच्छा, हाँ भैया, सभी यूट्यूब फैमिली को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, सेम टू यू पूजा दीदी। सुभाष भैया थैंक यू सो मच। जय भीम भैया, सुभाष भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। आपसे तो मेरा जुगो जुगा का दुश्मनी है कंचन लता दीदी। नहीं भैया, हमसे दुश्मनी नहीं रखना भाई। लगा दो। हाँ लगा लो, कोई सा भी लगा लो। हमारा कमेंट चोरी हो गया, कमेंट चोरी हो गया भैया आपका। कैसे? थैंक यू पूजा दीदी। तो पूजा से रखो दीदी, किसी बहन से नहीं रखना भैया। इससे नहीं निकलेगा, जम गया। वो बड़ी वाली जो उसमें शुभम लेके गया शायद अपने रूम में, देखो कहाँ ले गया। मेरे कमेंट में भी जीएसटी लगता है दीदी। अच्छा भैया। हर जगह जीएसटी ना लगाया करो भैया। जय भीम फूल कुमारी सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं क्या करूं? क्या बताऊं भाई? भाई परी जैसे बात नहीं हो रही है। जय भीम फूल कुमारी सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। आपका खाना पीना हुआ कि अभी नहीं हुआ? सरकार तो मेरा कमेंट पर भी जीएसटी लगा दिया है। अच्छा भैया, अम्मा से एक बार पूछो। हाँ लगा लो।
जय भीम सिस्टर। अब ना गर्म कपड़े पहनने से भी ऐसा होता है। क्या गर्म कपड़े पहनने से? हाँ, मैं खाना खाकर लेटी हूँ सिस्टर। अच्छा, बच्चे सब सो गए क्या सिस्टर? परी को बोलो कि अपनी मौसी से अच्छी तरह बात कर लेना। परी कौन है भैया? भारती भाई। लग गया ना? मम्मी मेरे रोज नहीं खजूरती रहती है। एक गला जब बंद हो जाता है ना ऊनी कपड़ों से, अभी कुछ दिन हो गई, आदत नहीं है ना, फिर धीरे धीरे जब पड़ जाएगी ना तब नहीं होगा। जय भीम सिस्टर, फूल कुमारी सिस्टर जी, जय भीम। रख दो यहीं पे। यही तो चाचा बहुत पिटाई, नहीं तो चाचा बहुत पिटाई करेंगे। जय भीम फूल कुमारी सिस्टर, जय भीम। अभी सब जाग रहे हैं सिस्टर, कोई सोया नहीं अभी। हाँ बहन, बच्चे तो जगते ही रहते हैं। मेरे तो एक सो गई है, अभी 2 जग रहे हैं। आप लोग के भी कमेंट पर जीएसटी लगा हुआ है। नहीं भैया। जय भीम भाई, मैं कल बातें करा दूंगी परी से। एक बात कराओगी सिस्टर? जय भीम। परी मेरी बेटी है दीदी। अच्छा भैया। जय भीम सिस्टर, जय भीम। थैंक यू सो मच। मेरी शादी बहुत पहले हो गया था, इसलिए मेरे बेबी छोड़कर भाग गई थी। अच्छा, इतनी सच्चाई छुपा के रखे हो। कोई बात नहीं। इधर आ जा बेटा, श्रेया इधर सीधे सो जा, पैर सीधे करके सो जाओ। प्रमोद भैया, बड़े भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जय भीम दोनों को भी। जय भीम नमो बुद्धाय भैया जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे लाइव में। जय भीम फूल कुमारी सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। मेरा नींद अभी नहीं आया है। अच्छा भैया, हम तो 5 रोज से सर्दी जुकाम और बुखार से परेशान है बहन जी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ भैया, बुखार टेस्ट करा लेना भैया। इस टाइम ना बहुत बुखार सबको ऐसा हो रहा है, टाइफाइड मलेरिया ऐसे बुखार हो रहे हैं। एक बार आप चेक करा लीजिएगा, टेस्ट करा के तब दवाई कराइएगा। बस इसको रख दो। दवाई ले लीजिए सुभाष भैया आप, चेक करा के। मौसम चेंज हो गया ना। थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। पापा को दिखा दो, जाओ पापा को दिखा दो। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय। और मेरी बेटी को भी साथ में लेकर चली गई थी। अच्छा, बहन ही रह गई है झूठ बोलने के लिए? बताओ। जय भीम भैया, जय भीम नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच।
यहीं से मैं बोलता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा दीदी। अच्छा, सच्चाई है, यही है? एक तरफ सच्चाई, एक तरफ हंसी। पूजा दीदी गुस्सा हो रही हैं अच्छे से। क्या भाई, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। कल मैं फोन करूंगी परी के पास, पूजा दीदी बोल रही हैं। भारती भाई, पापा को दिखा दो, अभी दवाई दे देंगे, दिखा दो। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू भैया। आप सो जाइए, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, दवाई वही खा के सो जाइए सुभाष भैया। खाना खा लो यार, उठ जाओ। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। भाई गलती से चला गया था। लोग, मैं परी बेटी से बात करूंगा पैर हाथ धोकर। पैर हाथ धोकर बात करोगे? पूजा दीदी बोल रही हैं अच्छा। हाँ जी, सोएंगे थोड़ी देर बाद में। लोग की जगह ओके है। अच्छा भैया, अच्छा, थैंक यू। कोई बात नहीं, हो जाता मिस्टेक। सुभाष भैया थैंक यू सो मच। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है भैया, रेस्ट करिए आप। उसमें देखने की एलर्जी की गोली है, हार्ट वाली, हार्ट वाली। सही होगा मेरा। दवाई के नाम सुनते सही हो गया। सही हो गया बिल्कुल ठीक, अब कुछ नहीं हो रहा है। नकलचे लड़के क्या बच्ची बहुत जगह चाहता है। जय भीम सुभाष भैया, जय भीम, थैंक यू सो मच। आज सो जाएंगे तो मच्छर उठा ले जाएंगे। क्यों भैया, मच्छर ज्यादा लग रहे हैं? आ गए हैं तो बहन को थोड़ी देर सपोर्ट कर
के तो जाएंगे अपने बहन को। थैंक यू सो मच भैया, बट सपोर्ट जरूरी नहीं है, बहन के लिए भी, बहन का भी कोई फर्ज होता है। भाई अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो सपोर्ट करेंगे। ऐसे जगेंगे स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। सबसे पहले आप अपना ध्यान दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे ना तब सब कुछ अच्छा लगेगा, सपोर्ट अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा। कोई बात नहीं है बहन। थैंक यू सो मच भैया। प्रदीप कुमार, जय भीम बहन जी। जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, स्वागत आपका हमारे लाइव में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप प्रदीप भैया, कैसे हैं? और परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? सुभाष भैया थैंक यू सो मच। खाना खा के आप दवाई वाई खा के रेस्ट करिए भैया। मैं पंखा चालू करके सो जाऊंगी। दीदी गर्मी लग रही है क्या? मैं इतनी हल्की हूँ क्या कि मच्छर उठा ले जाएंगे मुझे भाई। मैं अच्छा हूँ। ओके भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा ही रहना चाहिए बड़े भैया जी। और बताइए घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? मुझे पता था कि तुम डर जाएगी। कौन डर जाएगा भैया? भारती भाई, पूजा दीदी, दीदी मैं एक टीम बनाऊंगा 50 लड़के का। अच्छा, बना लो भैया। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। टीम क्यों बनाएंगे भाई, पहले बताइए। पूजा दीदी बोल रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुभाष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर पर रहता था तो आम अम्बेडकर युवा क्लब चलता था। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू सो मच सुभाष भैया। सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है दीदी। क्यों पूजा दीदी, सांस में लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या दिक्कत है दीदी बताओ। सभी बहनों को सपोर्ट के लिए मैं टीम बनाऊंगा 50 लड़के का, और उसका हैंडल मैं करूंगा ताकि कोई किसी को गलत नहीं बोले। ओके भैया, थैंक यू।
पर सब एक जैसे नहीं होते हैं भारती भाई, सबकी सोच एक समान नहीं होती है ना। सुभाष भैया थैंक यू, हमें तो अभी तक 5 बार ऑक्सीजन लेना पड़ा है। आपको ज्यादा दिक्कत है सुभाष भैया, दवाई ले लीजिए सही से और रेस्ट करिए भैया। सुभाष भैया आप रेस्ट करिए, जितना हो सके आप रेस्ट करिए। आपको क्या लगता है दीदी कि मैं इनमें सक्षम नहीं हो जाऊंगा? नहीं भाई देखो, मैं आपकी बात नहीं कह रही हूँ, आप सक्षम हो जाएंगे, मुझे पता है। जो अच्छे लोग होते हैं अच्छे लोगों की संगत में ही रहना पसंद करते हैं, ये तो मुझे पता है। बट सबके सबके माइंड, सबके विचार एक जैसे नहीं होते भैया ना, ये तो बहुत मुश्किल होता है। जो करीबी लोग होते हैं उनको आप समझ सकते हैं, बट इतने लोगों के बीच में आप सबकी भावनाएं तो नहीं समझ पाएंगे ना। अभी मैं आती हूँ भाई। ओके पूजा दीदी, बीते 5 महीने में। अच्छा भैया। सुभाष भैया आप अपना ख्याल अच्छे से रखिए। आप अकेले रहते भी हैं, आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पहले से ही कमेटी चलाने का काम करता हूँ। ओके भारती भाई, ओके थैंक यू भैया। अभी नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सुभाष भैया, उसको चलाने वाले पर निर्भर करता है दीदी। बात सही कह रहे हो भारती भाई, आपकी बात तो 100% सत्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई गलत नहीं करेगा। अच्छी बात है भाई, विश्वास है तो हो सकता है सब अच्छा ही हो। हाँ जी बहन जी, अकेले ही रहते हैं, मुझे पता है सुभाष भैया अकेले रहते हैं, स्वास्थ्य सही नहीं है, खाना पीना हर एक चीज का दिक्कत होता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। अपना ख्याल रखो, बहुत जरूरी है। दूर से सब लोग अपने हैं, पर करीब में मुसीबत में कोई नहीं होता भैया, अपने आप को झेलना पड़ता है। इंसान सिर्फ एक दूसरे का एक साहस बढ़ाता है। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। ओके पूजा दीदी, थैंक यू। आप जाइए, सो जाइए आप भी। जैसा संगत वैसा बुद्धि। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। भाई मैं जा रही हूँ, पूजा दीदी बोल रही हैं। इतना कॉपी पेस्ट मत कीजिए भाई। क्यों पूजा? हाँ बहन, ये तो हमारे दिल की बात कह दी आपने। बिल्कुल भैया, जो सच्चाई हो सच्चाई है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। दूर से सब लोग बोलेंगे, पर जब अपने ऊपर बीतती है ना, वो अपने ही झेलना पड़ता है, तब कोई आसपास दिखता नहीं है। यही सच्चाई है भैया। कुछ समय तक रुको पूजा, भारती भाई बोल रहे हैं। जाने दीजिए भैया, पूजा सिस्टर को नींद आ रही है, नींद आ रही है भाई। सोने दीजिए भारती भाई पूजा दीदी को। थैंक यू सुभाष भैया। 5 मिनट रुको बस। ठीक है भाई, ठीक है पूजा। ओके भाई, मैं ज्यादा समय तक नहीं रुकूंगा।
ओके भारती भाई, मैं तो आपको हमेशा बोलती हूँ भैया, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लाइफ से दूरी बना के रहो। हमारी कहानी से एक बड़ा फिल्म बन सकता है बहन जी। होता है भैया, जिंदगी में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो लगता है कोई दिखा देता है, कोई छुपा के जीता है, बस फर्क इतना ही होता है। दीदी आप पूजा को दीदी मत बोलो प्लीज। ओके भाई, नहीं बोलूंगी, सिस्टर ही बोलूंगी, पर मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। हम 5 बार मौत के मुंह से बाहर आ गए हैं। क्या हुआ था सुभाष भैया? वही बात तो मैं भी बोलती हूँ भाई। मुझे भी नींद ही आ रही है। और कुछ बोलो पूजा। क्या बात है पूजा, क्यों? मैं बहुत आपसे बहुत बड़ा हूँ दीदी। अच्छी बात है भैया, आप छोटे रहोगे तो भी बड़े हो, बड़े रहोगे तो भी बड़े हो। भाई जब हमेशा पिता की जगह ले सकता है तो फिर बड़ा क्यों नहीं हो सकता बताओ? सारी जिम्मेवारियां, सब कुछ जब एक भाई उठा सकता है तो बड़ा भी हो सकता है। इसमें क्या बात है? आप दीदी को समझाइए, दीदी मुझे मत बोलें। ओके सिस्टर, नहीं बोलूंगी। हम जन्म से ही दुखी इंसान हैं। समझ सकती हूँ भैया, सुभाष भैया, आपकी बात को मैं समझ सकती हूँ। एक कहावत है ना, दुखिया ही दुख का दर्द जानता है, बाकी कौन जाने। तो ये हकीकत होता है, जिसके ऊपर बीतती है वही दूसरी की परेशानी को समझ सकता है, बाकी सब लोग नहीं समझते हैं भैया। थैंक यू सो मच। मेरा उम्र अभी 85 वर्ष हो गया है। अच्छा भैया, कोई बात नहीं है, तब तो अभी आप बच्चे हो, 85 वर्ष हुआ तो। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। पूजा दीदी तो हंस रही हैं। और बताओ बड़का भैया। हाँ बड़की दीदी। अच्छा, मुझे सोनू भैया की याद आई, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, बड़की दीदी जय भीम। नो दीदी भाई। पूजा दीदी बोल रही हैं नो दीदी। आपका उम्र तो कम से कम 156 वर्ष हो ही गया होगा दीदी। इतना साल? इतना कम काहे बता रहे हो भैया? मुझे लग रहा है कि आपको अनुमान लगाने नहीं आता है फिर।
इतना कम एज बता दिए, बताओ। हमारे जन्म के बाद हमारी माँ बेहोश हो गई थी और वो घर पर थी और हम 7 दिनों तक हॉस्पिटल में। 8 दिन हमें होश आया था। और पूजा का भी उम्र 99 वर्ष हो गया होगा। अच्छा भैया, तो क्या 300 वर्ष? इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। भाई आप सच में पागल हो गए हो, पूजा दीदी बोल रही हैं। हम नहीं बोल रहे हैं भैया, पूजा दीदी कह रही हैं आपको। अब मेरे भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? कछुआ का उम्र स्थल पर रहने वाला जंतु से सबसे ज्यादा होता है। सही सही बताना, झूठ मत बोलना। ओके भाई। और कछुआ का जन्म उम्र 300 वर्ष होता है। अच्छा भैया। और हाथ का मुट्ठी बंधन गई थी, खुल नहीं रहा था। हमारा पूरा शरीर नीला हो गया। और ओके बोलो पूजा, तब बताएगी। सत्य बताना भाई, झूठ मत बोलना। 1 नवंबर मौत किसकी भैया? ठीक है बोलो। आपका नाम भारती भाई है क्या? क्यों पूजा दीदी, आप नहीं जानती हो क्या? अब मैं लेटती हूँ थोड़ा सा। नहीं, आरती बहन है। अच्छा, भारती नहीं, आरती बहन है। भारती का बहन हूँ, आरती। भारती तो हमारे टाइटल है भैया ना। भारती तो हमारा टाइटल। दो नवंबर बक्सर रेलवे स्टेशन पर हमारे ऊपर जोर बदमाश ने गोली चलाई, हम बच गए। क्यों भैया, बदमाश ने क्यों गोली चलाई आपको? कोई दुश्मनी थी क्या? अच्छा भाई। मैं परी से क्या बोलूंगी भाई, आप बताइए।
बक्सर बहुत खराब जगह है बिहार का। अच्छा भैया, मैं परी से क्या बोलूंगी भाई, आप बताइए। कि भारती भाई नहीं, आरती नाम है, और जहानाबाद उससे भी खतरनाक है जहां पर मेरा घर पड़ता है। अच्छा भैया, आपका घर जहानाबाद है। जय भीम, नीला सलाम, नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। अरविंद भैया जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। कैसे हो भैया, कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका? हाँ भैया, मेरा खाना पीना हो गया, आप बताइए आपका हुआ? परी बेटी को बोलना आरती हुआ बोलने के लिए। अच्छा बात है भाई। 16 नवंबर लाइक कर दिया है, 16 नंबर। अच्छा भैया, थैंक यू, थैंक यू। अरविंद भैया बताइए, आपका खाना पीना हुआ कि नहीं अभी? हम भी ठीक है, खाना खा लिया हूँ। अच्छा भैया, थैंक यू। 3 नवंबर बम्बई में हमारा तबीयत बहुत सीरियस हो गया था, 1 महीने खाना नहीं खाया था। गांव आए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था दवा देकर, लेकिन हम बच गए। पूजा दीदी बोल रही हैं, ठीक है भाई, बोल देंगे। इसी को कहते हैं जिंदगी सुभाष भैया। एक दूसरे को देख के इंसान को बहुत सीख प्रेरणा मिलती है, नहीं तो अपने चाहे छोटे हो चाहे बड़े दुख आदमी देख के घबरा जाता है, और एक दूसरे के साथ शेयर करने से सब सही हो जाता है। तब ये लगता नहीं हमको नहीं सबको है शायद। पहले तो खूब हंसी। मैं अपना जिला का नाम नहीं बताता हूँ किसी को, नहीं तो रूम भी नहीं मिलेगा। अच्छा भैया, ऐसा क्यों? क्यों हंसी पगली? 4 नवंबर गुजरात में अहमदाबाद जंक्शन पर हमें कॉफी में नशा मिला दिया था चोर बदमाश ने। अच्छा भैया, बोलेगी कि पहले चाचू थे अब बुआ बन गए। थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू सो मच।